Hi everybody, welcome to Geodost. And as you can see, today's discussion is just like what we're going to offer in Men's Mastery program that is basically designed for the students who have cleared prelims uh, 2026. Now they're preparing for mains. So what I'm just trying to tell you in this course, so the features are already discussed here, like it is already written here, like unlimited answer evaluation, probable question practice, tougher session, okay, one-to-one weekly mentorship sessions, okay, free interview guidance, and tougher notes and model answers. Those are basically the free part who we basically collected from the toppers, okay. And the solve numericals in hydrogeology part, in the expression geology part, those things we are going to get in this course. If you're going to discover the content part, what are going to see here, the probable question bank. In this bank we have already uploaded the paper 1, the paper 2 is completed and it will be uploaded by this evening, and paper 3 and paper 4 will be uploaded in the next 2 days. So what we are basically going to offer in this probable question bank, that as we have already discussed these things with many students, the probable question bank means we are going to give you a set of questions which are basically understood by, or you can say prepared by, the GSI people, okay. Those are already working in the GSI. They actually suggested these topics should be read, yeah, should be discussed, yeah, should be written well by the students who are preparing for mains 2026. So in this bank you will get a list of questions, and we have prepared for whole the paper, not like for this month this will be paper 1, for another month that will be paper 2, and in the other month this will be paper 3. In this way, if any student is preparing from paper 3 or paper 4, he will be in trouble, because we are providing for the paper 1 and he is preparing for paper 4, so it will be much more difficult. So that's why what we're basically going to do, we already providing the numbers of questions, and you just wrote those things and give us, and we are going to evaluate on limited times. Whatever will be the questions or whatever will be the attempts, we will every time we will give you the feedback by the mentors who are already working in the GSI, okay. And they will obviously going to tell you that where you are lacking something, where you can add something, okay. So those things will be much more important for you guys. And in the in the topper contents, how what are going to get, we have already collected many notes, okay, as per the section. In the, if you're going to see the paper 3, you will get all the things here. In the paper 2 you're going to see as per the section, okay. This is one topper, another one is from 2023. Here we will get the section wise, all the things are already collected, so by which there will be no problem for you guys, that sometimes students got confused ki where I have to write, where I have to read, all the things. It is already here, and these notes is going to be updated more within 2 to 3 days. And in these sections, so they are basically going to tell you that कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, कंटेंट में कोई भी कमी नहीं रहेगा। तो अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, अगर कोई टॉपिक्स अगर ये सब सब टॉप नोट्स में नहीं है, so what are basically going to introduce another one, means writing how. So in this section, so what are basically going to include, there is another sets of questions, okay, another sets of notes you can say. Here you can see as per the section, मैं एक खोल के आपको दिखा देता हूँ. If you are going to see the paper A, section A, so in section A what are going to get, we have already seen the in hydrogeology section A. So there will be obviously going to be the basic things like the AccuFor, AccuClude, AccuTad, okay. So those things will be there, okay. So this is clear, okay. Origin, it is as per the syllabus written, from starting from the origin of water to global water cycle, and all the things are going to be discussed or written well here, okay, as per the GSI format, okay. And if you're going to see the paper B, okay, what is the paper B? Paper B is the groundwater movement and well hydraulics. Okay, in this session you will see all the things are going to be written in a proper format as per the GSI format, and it will be much more helpful for you guys. Okay, so in this way we are going to add more things. The topper notes are basically collected from the toppers. Okay, in the mains writing hub we are basically providing the additional resources, ताकि ऐसा ना हो कि कोई स्टूडेंट्स को कम हो जाए कि नहीं मेरे को थोड़ा कंटेंट कम लग रहा है, ये लग रहा है, तो वो लग रहा है, और ये सब चीज़. बट द मेन प्रॉब्लम और द मेन अप्रोच to the most of the students face these problems is that the mains writing. So what are basically our main aim is unlimited answer evaluation. The more number of questions you will write, the more will be it
बी बेनिफिशियल फॉर यू गाइस। सो इन दिस केसेस आप जितना चाहे क्वेश्चंस लिखें और हमको भेजें, तो हम उसको रिव्यू करेंगे, फीडबैक देंगे, फिर वीकली जो आपका मेंटरशिप प्रोग्राम होगा हम उसको डिस्कस करेंगे कि आपका कैसे चल रहा है, कहाँ पे आपने स्टार्ट किए, कैसे किए, इस वीक का क्या डेवलपमेंट है, क्या कर सकते हैं और कितना टाइम बचा, तो वो सब चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड इन दिस केसेस, in this folder you will find the explosion geology part. Okay, here you will find all the things in a very proper way. Okay, and in the syllabus this is normal basic things everybody does have, and the previous year questions we have already uploaded last 12 year questions, because we have like 16 to 17 years, but I don't think there those will be required for now being. Okay, and these are the blank answer sheets, just like if you need you can just take the print out. Okay, to ये आपको बहुत हेल्प करेगा लिखने में। ठीक है, तो ये सब चीज हो गया कि आपके अंदर कंटेंट में क्या मिलेगा। एंड नेक्स्ट चीज क्या है जो मैं यहाँ पे नहीं है, तो क्या है अभी तक अपलोडेड नहीं हुआ है, क्योंकि अभी इट्स अराउंड 1 वीक, तो हम अभी अभी तुरंत उसको स्टार्ट करेंगे। उसमें क्या होगा, आपका ये जितने भी कंटेंट है ये नेक्स्ट प्रीलिम्स तक ये अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट प्रीलिम कब है, 2027 फरवरी, तो वो तक ये अवेलेबल रहेगा। ऐसा नहीं कि आप अभी ले लिए 2 महीने के बाद वो खत्म हो जाएगा, नहीं, ये सब रहेगा, ताकि कोई स्टूडेंट्स अगर 2028 में अगर वैकेंसी आता है, सॉरी 2027 में अगर वैकेंसी आता है, तो ये सब चीज़ें से वो प्रिपेयर खुद को कर पाएगा। ठीक है, और एक चीज़ क्या है, जो हम लोग क्या कर रहे हैं कि वी हैव बेसिकली 4 पेपर्स। इफ एनी स्टूडेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर होल ऑल द पेपर्स, देयर विल बी 4 पेपर। अगर कोई स्किप करना चाहता है पेपर 3 को या फिर कोई पेपर 4 को, एज पर हिज और हर रिक्वायरमेंट, सो ही और सी कैन स्किप। ओके, बट वी विल रिकमेंड दैट यू प्रिपेयर फॉर 4 पेपर्स एटलीस्ट। तो उसमें क्या होगा, 4 पेपर, 5 सेक्शंस, 4 पेपर, देयर विल बी 20 सेक्शंस। फॉर 20 सेक्शंस द राइटिंग मेथड फॉर मेंस इट इज डिफरेंट। तो वो केसेस में हम लोग क्या करेंगे, वी विल कंडक्ट द लाइव क्लासेस, एंड दोज लाइव क्लासेस आर बेसिकली going to tell you in paleontology what you have to write and what should be the approach to the questions. In stratigraphy it is different. In stratigraphy you just have to put a map, and in the map there will be proper caption, and in the map there should be proper shear zones, where is the fault, where is the strike, where is the contact zone, all the things will be there. So those things we are going to discuss for every sections. Okay, at least 20 or 22 sections will be there, and those sections are going to be particularly going to focus a particular section। ठीक है, एंड दो सेक्शंस हम उसमें ये सब चीज़ डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने एक स्ट्रैटिग्राफी का एग्जांपल दिया, ऐसे कि अगर मान लीजिए कि हाइड्रोजियोलॉजी, या फिर कोई मान लीजिए कि आपका मिनरोलॉजी है, ठीक है, या फिर कोई रिमोट सेंसिंग है, तो रिमोट सेंसिंग में जो माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग है उसमें क्या क्या लिखना है। कभी कभी क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है कि ये टेक्सचर इसमें क्यों फॉर्मेशन होता है, या फिर ये बाइनरी सिस्टम में कौन सा टेक्सचर आता है, या फिर आपको जस्टिफाई करिए कि ये वाला यहाँ पे होगा या नहीं होगा। तो वो केसेस में आपको कैसे लिखना है, कैसे मार्क डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कैसे स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कैसे टाइम डिस्ट्रीब्यूशन करना है एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, वो सब चीज़ हम एक एक करके उसमें जो सेक्शन रहेगा वो पर्टिकुलर सेक्शन के लिए सब डिस्कस करेंगे। लेकिन ये लाइव क्लासेस का मतलब ये नहीं कि हम हर सब्जेक्ट को मतलब शुरू से करेंगे, क्योंकि लाइव क्लासेस का अगर ऐसे करेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा, और हमारे पास कम टाइम है। अगर शुरू से कोई स्टूडेंट्स पढ़ना शुरू करेगा कि हर सब्जेक्ट का एक एक घंटा वीडियो देखेगा, रोज अगर 4-5 घंटा का वीडियो देख रहा है, तो उसमें उसका मेमोरी या फिर उसका नोट्स भर रहा है, लेकिन उनका राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हो रहा है। तो जो कि हमारा मेन मोटो वही है कि आप जितना लिखेंगे उतना ही आप परफेक्ट बन पाएंगे, बिकॉज इन मेंस यू हैव टू स्ट्रगल विथ टू थिंग्स, वन इज योर टाइम मैनेजमेंट, अनदर इज योर स्पेस मैनेजमेंट। अगर आप स्पेस मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, तो दिक्कत होगा। और उस जो चीज़ के लिए लाइव क्लासेस या फिर कोई वीडियो क्लासेस का ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसको देखेंगे या फिर ये करेंगे, तो आप अल्टीमेटली आपका ब्रेन को शार्प कर रहे हैं, आपका मेमोरी को शार्प कर रहे हैं, आपका नोट्स को अच्छा बना रहे हैं, लेकिन आपका राइटिंग स्किल नहीं बढ़ रहा है कि मैं कैसे लिखूंगा 4.5 मिनट में एक पेज, या फिर 3.5 पेजेस में 1 मिनट, 3.5 मिनट्स में एक पेज, वो नहीं हो पाएगा। तो वो सब करने के लिए आपको जितना होके लिखना पड़ेगा, और बस लिखने से नहीं होगा, आप कैसे लिख रहे हैं, उसमें क्या छोड़ रहे हैं, क्या गलत हो रहा है, क्या मिसिंग हो रहा है, क्या लाग हो रहा है, तो वो सब चीज़ भी ज़रूरी है। तो दैट इज़ आवर मेन एमओ, दैट इज़ आवर मेन एम, दैट कि हम स्टूडेंट्स को ये बता पाएँ, या फिर उनको इवैल्यूएट कर पाएँ, या फिर उनको फीडबैक दे पाएँ कि आप कैसे बेहतर करेंगे,
कैसे लिखेंगे। तो इसलिए हमने ऑलरेडी क्वेश्चन बंडल रखे हैं। उसके अलावा अगर आप कुछ लगता है कि नहीं नहीं इस साल ये क्वेश्चंस का थोड़ा इंपॉर्टेंस है, तो आप वो क्वेश्चंस भी लिख के अगर हमको मिसलेनियस अंडर में सेंड करेंगे तो हम लोग आपको फीडबैक विद इन 2 to 3 days के अंदर आपको दे देंगे। और वो सब फीडबैक को हम वीकली उसको डिस्कस भी करेंगे। ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। एंड हम लोग ये चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े और आपका जो चांसेस है कि मेंस में अच्छा करने का उसको मैक्सिमाइज करें। Thank you. And in the next video, we are going to see how you are going to upload the notes in the Google form, yeah, in the app. Thank you.